Hello, my dear students. Welcome back MS-CIT era सेशन नंबर 40 में। चलो तो हम देखते हैं सेशन नंबर 40 के नॉलेज चेक टेस्ट 1 के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आइकॉन विल हेल्प यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो बी वाला आंसर है ये वाला इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइकॉन्स विल यू क्लिक ऑन टू एम्बोल्डन द टेक्स्ट। तो इसका आंसर है सी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, to whom do you present a business speech? तो इसका आंसर है बी, your investors. Question number 4, in the offline mode, which option do you have to click for exploring more PowerPoint templates? तो इसका आंसर है डी, more themes. Next question, you want to delete a slide from the sorter panel. You right click on the slide. Which option do you have to select that? इसका आंसर है ए, delete slides. Next, सेशन नंबर 40 नॉलेज चेक टेस्ट 2 अबाउट वीड.io AI टूल के ऊपर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वीड.io simplifies video editing primarily by using AI for। तो इसका आंसर है बी, ऑडियो ऑटोमेटिक subtitles and translations. Next question, vid.io's AI avatars help users by, इसका आंसर है सी, acting as virtual presenters. Next, session number 40 knowledge check test 3 uh, AI tool evernote AI tool के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स है। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज evernote to help users quickly find specific notes? इसका आंसर है ये, scans handwritten text. Next question, what makes Evernote's search functions efficient? तो इसका आंसर है बी, searches inside PDFs. नेक्स्ट, सेशन नंबर 40 नॉलेज चेक टेस्ट 4 सोशल बी AI टूल के ऊपर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोशल बी असिस्ट यूजर्स थ्रू शेड्यूलिंग पोस्ट बाय यूटिलाइजिंग विच AI ड्रिवन अप्रोच? इसका आंसर है ये, कंटेंट कैटेगराइजेशन. नेक्स्ट, question number 2, social B only provides AI generated options but does not optimize engagement based on user interactions. इसका आंसर है बी, false. सेशन नंबर 40 सेल्फ पाथ लर्निंग अबाउट गार्डनिंग योगा वर्कशॉप यू पोस्टर के ऊपर क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लिक ऑन डैश टू इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। इंसर्ट में से हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं, तो इसका आंसर है सी, इंसर्ट. नेक्स्ट, क्लिक ऑन डैश टैब एंड डैश ग्रुप टू अलाइन द टेक्स्ट टू सेंटर। तो हम होम टैब में से पैराग्राफ ग्रुप में से हम क्या करते हैं, अलाइनमेंट दे सकते हैं, सेंटर हो, राइट हो, लेफ्ट हो, जो भी हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, टू रिकलर द टेक्स्ट वी कैन यूज द आई ड्रॉपर टूल फ्रॉम होम टैब डैश फॉन्ट ग्रुप. इसका आंसर है ट्रू. नेक्स्ट, सेशन नंबर 40 सेशन कंप्लीशन टेस्ट. First question है, the Sharma family has many devices connected to their home Wi-Fi, such as laptops, phones, and smart TV. What is the general term of each connected device in network? इसका आंसर है बी, node. Next question, which two protocol protocols are necessary for safely opening a banking websites and sending a confirmation email after a transactions? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसका आंसर है ये एंड डी, ये दो ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स कैन कवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी एंड सी, ये दो ऑप्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ सर्वर इन अ नेटवर्क? तो इसका आंसर है ए एंड बी, ये दो ऑप्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस कैन बी कनेक्टेड एज नोड्स इन अ नेटवर्क? तो इस क्वेश्चन के ये दो ऑप्शंस है, ए एंड बी, ये दो ऑप्शंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल सपोर्ट सिक्योर एंड रिलायबल डाटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट? तो इस क्वेश्चन के ए एंड बी, ये दो ऑप्शंस है. नेक्स्ट, which activities can be easily performed with low internet bandwidth? तो इस क्वेश्चन के ए एंड बी, ये दो ऑप्शंस है.
Next, computer in a office are connected within the same building to share files and printers. What type of network is this? तो इसका आंसर है सी, local area network. Next question. When Anushka searches for information on Google using her laptop requests data from Google's computers. What role does her laptop play in this process? इसका आंसर है A, client. Next question and last question. Dia sends an emails with her project report to her teacher. Which protocol is mainly used to send the email from her device to the mail server? तो इसका आंसर है सी, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो इस तरह से ये था सेशन नंबर 40. तो अभी हमने इस सेशन के नॉलेज चेक टेस्ट एंड AI टूल के ऊपर के नॉलेज चेक टेस्ट, सेल्फ पाथ लर्निंग टेस्ट एंड सेशन कंप्लीशन टेस्ट के क्वेश्चन आंसर सामने देखे हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखकर आप आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो ताकि आपके मार्क्स माइनस ना हो जाए. तो रुकते हैं हम जब तक. तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय.